Today we have two lectures, so we will continue our syllabus topic next PT2. First, write down the syllabus. Otherwise, I will also send the syllabus in class group. Syllabus of PT2. Lines and angles, triangles. एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि हमने क्लास में डिस्कस ना किया हो. And one more point is there. पहले ये note करो, then I will discuss that point. Five chapters are there in PT2. Note down these chapters. Name of these chapters. As you know very well that in PT2 half yearly exam, PT1 syllabus will also be covered. The first 3 chapters plus 5. Total 8 chapters are there in half yearly. There was one question in paper that find the zeros. आपके जो factors मैंने question था, find the zeros of polynomial PA. Some polynomial was there. Question में आपके पास जो factors बने थे, that is x minus 1, x minus 5 and x plus 3. These are the three factors of that polynomial. आपको zeros पूछी गई थी, factors नहीं. 80% स्टूडेंट्स ने फैक्टर्स की फॉर्म में छोड़ा. आपको क्लास में बताया भी गया था कि आपको जब जीरोस पूछी जाए तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन स्टॉप नहीं करना. दीज आर द फैक्टर्स. जीरोस क्या है इसकी? 1, 5 एंड माइनस. कैसे जीरोस फाइंड आउट करते हैं? पुट दिस इज इक्वल टू 0, x minus 1 इक्वल टू 0. सो x is 1, x is 5 एंड x is minus 3. दीज आर द जीरोस. ये तो फैक्टर्स बनाया, अभी आपने जीरोस तो बनाया नहीं. हाँ, अगर क्वेश्चन होता फैक्टराइज तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक थी. तो ऐसी गलती नहीं करनी. So now give heading for the chapter. This is chapter number, I think 3. Chapter number 6, lines and angles in your book. Chapter number 6, lines and angles. Give heading on your notebook. As usual, जैसे PT1 में किया था, आपकी होमवर्क और क्लास वर्क नोटबुक दोनों सेपरेट होनी चाहिए. जब भी चेकिंग के लिए आपको बोला जाए, आपने अपनी होमवर्क नोटबुक की पिक सेंड करनी है. So your homework and class work notebook should be separate. So open chapter number 6. So before starting this chapter, there are the very basic terms and definition which you have already read in your previous classes. Okay, now first of all, who will tell me the definition of line? No need to write it. We will only discuss these definitions. Line. Yes, Manch. As the name is line and angle, so you must know what is line, what is angle. Yes, Kiran ma'am, please unmute both of them, Vansh and Haridya. Good morning, Yes, ma'am. good morning. Yes, Line Haridya. is
line is a figure that can be extended in both the directions and has no thickness. Okay, no thickness and has no endpoint. Okay, as you said, it can be extended in both the direction, or we can say it has no endpoints, right? And now what is angle? Salil, Kashish, any one of them? Ma'am, please unmute any one student जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं. सलील, कशिश मैम सारे अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. Okay, unmute yourself. Ma'am, give you option to unmute Yes, yourself. ma'am. Yes. Who is there? Ma'am, Salil. angle. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, angle is the space or the degree between the two intersecting lines. Two intersecting lines. Okay, any other student? Definition of angle? Angle is when two lines originate from a same point. Yes, and that common point is called. इसमें lines नहीं बोलते, rays. When two rays originate from the same point, they form an angle. Origin. Origin. Origin नहीं बोलते उसको, vertex बोलते हैं. In case of angle, Vertex, it is vertex. vertex. Okay. Vertex. और उन दोनों lines को, rays को क्या बोलते हैं? Arms. When two rays originate from the same point, this we call vertex, and these are called arms. Right? These are the very basic definition which you have already read in your 4th, 5th standards. So no need to write it. Now next come to the point, collinear points. अभी जो मैं बोर्ड पे लिखूंगी वही आप नोटबुक पे नोट करोगे. Meanwhile, we will only discuss the basic terms. Collinear. Yes, Narinder. Yes, so ma'am, collinear points are the points which lie on the same line. Yes, points which that lie. Yes, Same points line. which lie on the same line are called the collinear points. Similarly, if non-collinear, if points do not lie on the same line, they are called the non-collinear points. अभी हमने angles की बात की थी. We have so many types of angles, like acute angle, obtuse, then right, then straight, then reflex, and then complete. Now one by one, hurry up, discuss these. Acute angles. Ma'am, greater than 0, less than 90. Greater than 0 but less than 90. Obtuse. Greater than 90, Greater less than 90 but 180. less than 180. 180. अगर किसी ने एक बार आंसर दे दिया, इट्स अ रिक्वेस्ट, नॉट डोंट आंसर इट अगेन. सबको चांस मिलना चाहिए, राइट? सो नवनीत, राइट. Right, the 90 degree is equal to right angle. Yes, Kashish, straight. $180 degree angle. 180 degree reflex. Sagrika. Ma'am, reflex angle is of more than 180 degree but less than 360 degree. Yes. Namish, complete. An angle of 360 degrees. 360 degree. Okay, you all know the types of angles. Now next come to the adjacent angles, linear pair and vertically opposite angles. This we will have to write. So first give heading adjacent angles. Write down on your notebook adjacent angles. Can anybody tell me the definition of adjacent angles? शिवानी मैम, सलील. Salil, Vansh, Ridya, Ravnoor. Yes, Ravnoor. Angles having same vertex. Yes, angles having same vertex.
Any other condition for the adjacent angles? Both have a common ray. One common ray, yes, both have one common ray. So these are the two main points of the adjacent angles. Write down. Two angles are said to be adjacent. Two angles are said to be adjacent. Yes. First point is they have common vertex. Second, they have one common arm. So रे को हम angles के केस में arms बोलते हैं. Rays angles के केस में arms होती हैं उनकी. So they have one common arm. So you can see from the figure. Suppose this is A, O, B, and C. These two angles, AOB and BOC. We can say AOB and BOC are two adjacent angles. Why? Because both have the common vertex O. AOB vertex O, BOC vertex O. और इन दोनों की एक आर्म कॉमन है यहाँ पे. OB is the common arm of angle AOB and angle COB. ये आर्म कॉमन है दोनों में. And the non-common arms, ये दोनों non-common है. This is common arm, this is non-common arm on the either side of the common arm. Either side means one on the left, other is on the right. And the third point is the non-common arms are on the either side of common arms. I hope it is clear to you. So you can write from the figure that here angle AOB and COB are adjacent angles. Write down this. Okay, now answer one question. Yes, Narinder. Wait, Narinder. इस क्वेश्चन के बाद अपना आंसर पूछना, अपना क्वेश्चन पूछना. Now the question is, my question is, are angle AOC and angle AOB adjacent angles? AOC and AOB, क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं? सचित, सचित अनम्यूट योरसेल्फ. सचित अनम्यूट नहीं कर पा रहा. यस नमेश. Ma'am, no, ma'am, they are not adjacent angles. Why? Your answer is right. No, they are not Because adjacent the angles. nodes are not on either side common. Because आपकी नमेश आवाज क्लियर नहीं सुनाई दी. Okay, Kashika, your voice is cracking, Namish.
Yes, Kashika. Good morning, ma'am. Speak loudly. Good morning. Ma'am, the angle is not at, ma'am, angle AOC and AOB are not adjacent angles Yes. because the non-common arms are not on the either side of common arms. Yes, हमने इसमें कंडीशन पढ़ी थी अभी एडजेसेंट एंगल्स में कि जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के लेफ्ट राइट होनी चाहिए, ठीक है, ऑन द ईदर साइड. बट अब इसमें क्या है, AOC, AO आर्म आ रही है, नेक्स्ट इज AOB, फिर AO, दोनों में AO कॉमन आर्म है, बट इसमें जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या है, एक ही साइड पे है, विच इज नॉट द कंडीशन ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, राइट. जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के ईदर साइड होनी चाहिए, नॉट ऑन द सेम साइड. सो यू विल राइट डाउन द रीजन. नो AOC, write it yourself. No AOC and AOB are not adjacent angles because the non-common arms are on the same side of the common arm. Write down this. Next, write down linear pair of angles. Next, write down linear pair of angles. अभी हमने पढ़ा adjacent angles. A, O, B and C, right? अब लीनियर पेयर क्या है? अगर ये दोनों जो नॉन कॉमन आर्म है दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, होंगी ये इधर साइड ही कॉमन आर्म के, बट इफ दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन मींस अगर A इस तरह आ जाए, यहाँ पे आ जाए, इस तरह स्ट्रेट हो जाए, OC इस तरह, if they form a line then the angle which formed is called a linear pair of angles like this. OC, here it is B and A. अब ये देखो, ये एंगल AOB एंड सेकेंड एंगल इज COB. अब इसमें ये कॉमन आर्म है OB और जो नॉन कॉमन आर्म है वो इधर साइड है दोनों के, OB कॉमन आर्म के, वन इज ऑन द दिस साइड, अदर इज ऑन द दिस साइड. बट जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है. व्हेन द नॉन कॉमन आर्म्स form a straight line, then the name of the angle is linear pair of angles. Now we can say all adjacent angles are not linear pair, but all linear pairs are adjacent angles. Can we say this? क्योंकि हम इसको adjacent angles भी बोल सकते हैं, ठीक है. अगर हमसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि AOB और COB adjacent angles हैं, yes हैं. ये linear pair फॉर्म कर रहे हैं, yes they linear pair भी फॉर्म कर रहे हैं, बट यहाँ पे ये सिर्फ adjacent है, linear pair फॉर्म नहीं कर रहे. So all adjacent angles are not linear pair, but all linear pair angles are the adjacent angles. Yes, Shrey and Vansh, आप दोनों ने हाथ खड़ा किया. Unmute yourself. Shrey, Vansh, yes, Vansh. So write down. If the non-common arm, if non-common arms form a straight line, then the non-common arms form a straight line. In that case, they are called linear pair of angles. Then in that case, angles formed in that case linear pair of angles are formed. और लीनियर पेयर की हमें एक और प्रॉपर्टी पता है, that the sum of angles is equal to 180 degree because the angle this form a straight line और straight line का एंगल कितना बनता है
180 degree. That is angle AOB plus angle COB is equal to 180 degree. After this, give heading vertically opposite angles. Vertically opposite angles. नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा मैथ्स का ही है आज. सो आपके पास जो भी आपने फिगर्स ड्रॉ करनी है, हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी आज इसकी. जो भी फिगर्स ड्रॉ करनी है विद प्रॉपर, अगर पेन के साथ कर रहे हो विद कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन. बिना फिगर के अगर आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करोगे तो आपके नंबर नहीं मिलते. आप चाहे फिगर बुक में बनी है, चाहे फिगर बुक में नहीं बनी, आपको क्वेश्चन के साथ नहीं दी हुई बट उसकी फिगर बन रही है, यू हैव टू फर्स्ट ड्रॉ द फिगर एंड देन स्टार्ट द क्वेश्चन. विदाउट फिगर ज्योमेट्री चैप्टर किसी ने नहीं करना. सबसे पहले रूल क्या है, आप फिगर ड्रॉ करो. नेक्स्ट हेडिंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो आपके पास प्रॉपर स्केल के साथ, पेन के साथ फिगर ड्रॉ करनी है. पेंसिल से भी कर सकते हो. देयर शुड बी फिगर शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन. Okay, who will tell me vertically opposite angles? Again, same. Kashish. Kashish ने आंसर कर चुकी है. No, Kashish नहीं. हिमांशी, इशिता. इशिता. Unmute yourself, Ishita. Yes, ma'am. Yes, what are vertically opposite angles? Vertically opposite angles are those which are equal when the lines are intersects. The angles are equal. वो तो प्रॉपर्टी हो गई ना. एंगल्स आर इक्वल आर द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सिंपल. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर व्हाट? व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर and then angles formed by these two lines are called vertically opposite angles. So write down the vertically angles formed when two lines vertically angles are formed when two lines cut each other or intersect each other at a common point. When two lines intersect each other at a point. Suppose here we can say, suppose this line and this line, AB and CD. So AB and CD are the two lines which cut at a point O, and so the angles formed by these lines, one is angle AOD and other is BOC. These are vertically opposite angles. One is AOC and other is BOD. These are vertically opposite angles. Property are the vertical opposite angles are always equal. This is a theorem in your book. We will do the proof of this theorem later on. So you can write angle AOD and BOC, one pair. Second is AOC and BOB, second pair are vertically opposite angles. हरिद्या, वंश, सलिल, आप तीनों ने हाथ खड़ा किया. डू यू हैव एनी क्वेश्चन?
Similarly, if we learn about non-intersecting lines, intersecting lines and non-intersecting lines. Lines which cut each other are intersecting and lines which do not cut each other are not intersecting. इससे पहले करना चाहिए था हमें. So anyhow, so now next write down intersecting and non-intersecting lines. In brief, you can write intersecting lines, lines which cut each other. Write down lines which cut each other. Intersecting and non-intersecting. Drop some one figure. So these are intersecting lines. Next is non-intersecting lines. Lines which do not cut each other. Like this. Lines do not cut each other. Next, come to parallel lines. Parallel lines are those lines which do not cut each other and the distance between them, perpendicular distance between them is always uniform. Lines which do not cut each other and the perpendicular distance between them is uniform throughout. Why we said it perpendicular? Because the straight distance, this distance, ये distance हमेशा क्या रहता है इसमें यूनिफॉर्म. ये नहीं कि यहाँ पे सपोज 4 सेंटीमीटर है तो आगे चलते चलते वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा. अगर ऐसा होता है तो वो लाइंस पैरेलल लाइंस नहीं होती, वो लाइंस कौन सी बन जाती हैं फिर से? इंटरसेक्टिंग लाइंस. So here we can say L is parallel to L. Write down all the three definitions.